Okay, good morning students. Today we'll discuss first rancidity, then corrosion, and then some activities of the first chapter. So we will start with rancidity. The slow oxidation of oil and fats present in the food material resulting in the formation of foul smelling compound is called rancidity. इट मीन्स जब खाना अपने आप थोड़ी देर के बाद या तो कुछ घंटों के बाद डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, देन वी से द फूड बिकम रैंसिड. उसके पीछे की केमिस्ट्री ये है बेटे कि फूड मटेरियल में जो ऑयल और फैट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन से कोई ऐसा कंपाउंड बनता है जिससे खाना जो है वो खराब हो जाता है और उसमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी? देयर आर सेवरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी. नंबर वन, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. There are some antioxidant. If we add those antioxidant to the food material, it will last longer. The second is by vacuum packing. Vacuum packing means by keeping the food material from the reach of oxygen to avoid their oxidation. Or by replacing air by nitrogen. जो आपने एयर टाइट पैकेजेस देखे होंगे जैसे लेज है, एंकल चिप्स हैं, ऐसे बहुत सारे खाने की जो चीज़ें होती हैं उसमें एयर भरी होती है. बेसिकली उसमें एयर तो होती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है. यू नो दैट देर आर टू मेजर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, वन इज नाइट्रोजन, अदर वन इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन से तो फिर वही रैंसिडिटी हो जाएगी. तो ऑक्सीजन निकाल के सिर्फ क्या रखते हैं, सिर्फ उसमें नाइट्रोजन रखते हैं, तो उससे फिर वो रैंसिडिटी नहीं होती है. वी कैन अवॉइड रैंसिडिटी बाय रिप्लेसिंग एयर बाय. देन द फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेशन. यानी अगर हम खाने को फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं, तो भी हम उसकी रैंसिडिटी को थोड़ी देर के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. So these are the factors by which we can avoid rancidity. Now there is another article called corrosion or rusting. Corrosion, we'll discuss the corrosion of metal in third chapter in details. Here in this chapter we are only discussing about the rusting of iron. What is corrosion? The decaying of metal on exposure to humid air is called corrosion of metal. यानी जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे मान लो आयरन के आर्टिकल को अगर आप एयर में ऐसे ही छोड़ दें तो मॉइस्चर और एयर दोनों से मिलके आयरन में एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है. दैट ब्राउन कलर कोटिंग इज कॉल्ड रस्ट. उसके पीछे की केमिस्ट्री, ये आप सबको पता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है वो देखेंगे. दिस इज एन आयरन आर्टिकल. Fe is the symbol of iron. When you expose the iron article in open air, then it will react with moisture present in the atmosphere and oxygen which is also present in the atmosphere. So combiningly we can say that this is damp air. The moisture and oxygen combined together is known as damp air. So when iron exposed to damp air, it forms ferric hydroxide. It forms ferric hydroxide. And then finally ferric hydroxide dehydrates to give Fe2O3 XX2O, that is ferric oxide, and hydrated ferric oxide which is called rust. And we can prevent rusting by many ways, like paint कर सकते हैं, उसकी electroplating कर सकते हैं, alloying कर सकते हैं. These are the ways to prevent rusting of iron. इसमें इतना ही है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है. कोरोजन ऑफ मेटल डिटेल में थर्ड चैप्टर में. सो वी शैल डिस्कस कोरोजन इन डिटेल इन द थर्ड चैप्टर. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी. द फर्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.1. दिस इज कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम इज फाउंड in the lab in the form of ribbon, black ribbon. So when magnesium is burnt, you can see the diagram also. When magnesium is burnt in oxygen, it forms magnesium oxide,
and it forms a white ash of magnesium oxide, and the color of the flame is dazzling white flame. Dazzling white flame. It's a example of combination reaction also. Move on to the next activity. The next activity, activity 1.2, take lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide. This is lead nitrate, PbNO3 is lead nitrate, and this is potassium iodide. So when these two compounds react, they form lead oxide and potassium nitrate. Actually, this lead oxide is yellow precipitate of lead iodide is formed. Lead nitrate, potassium iodide forms lead iodide and potassium nitrate. This is yellow precipitate of lead iodide is formed, and this is an example of double displacement reaction. The third activity 1.3, take few zinc granules in a conical flask and add hydrochloric acid. So when हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एसिड लेंगे. When hydrochloric acid or sulfuric acid is added to zinc, it forms zinc sulfate and hydrogen gas. In case of HCl, it forms zinc chloride and hydrogen gas. So in both the cases, hydrogen gas is displaced. So it's an example of displacement reaction. Now we move on to the next activity. This is next activity, activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime and adds water to it slowly. This is calcium oxide, which is known as quicklime. Calcium oxide is called quicklime, and water is added to it, and calcium hydroxide is formed. CaOH twice. Calcium hydroxide is formed, and this reaction is known as slaking of lime. Quicklime, calcium oxide. When water is added to quicklime, it forms slaked lime, which is also known as lime water, calcium hydroxide. And this is again an example of combination reaction. Now there is one more reaction which is very, very important. When carbon dioxide is passed through the slaked lime, when carbon dioxide, this is carbon dioxide, is passed through the slaked lime, which is just formed by the addition of water to calcium oxide, it forms white precipitate of calcium carbonate. This is the formation of calcium carbonate and hydrogen. So this lime water turns milky. This is an example of again the combination reaction. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns the lime water milky. Next activity. So the solution turns milky due to the formation of calcium carbonate. Activity 1.5. This is an example of decomposition reaction. This is iron sulfate or ferrous sulfate. Ferrous sulfate, you know that the ferrous iron के जो salts हैं वो green color के होते हैं, light green color के. When ferrous sulfate is heated, when a solution of ferrous sulfate is heated, it gives ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So it's a decomposition reaction. Ferrous sulfate decomposes to give ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. This is sulfur dioxide, this is sulfur trioxide. It's a very, very important reaction. Activity 1.6. Take 2 grams of lead nitrate powder in a boiling tube and heat it. So lead nitrate को heat करेंगे तो क्या आएगा? This is the reaction. This is again very, very important reaction. Again thermal decomposition reaction है. This is lead nitrate, PbNO3 twice. When this is heated, it forms lead oxide, NO2, nitrogen dioxide and oxygen gas. You can see the color also. Lead nitrate is a white color, lead oxide yellow, and NO2 is a gas of brown color gas. NO2, nitrogen dioxide, is a brown color gas. So when lead nitrate is heated, it decomposes to lead oxide, a brown gas and oxygen gas. This is again decomposition reaction. Activity 1.7. This is again it based on decomposition reaction.
take a plastic mug, drill 2 holes in it and connect these electrodes to a 6-volt battery. This is battery, these are 2 electrodes और electrodes के अंदर ये हमने solution में पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसमें करंट पास करेंगे. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. यानी कि बेसिकली क्या होगा, ये वाटर है, इसमें जब हम करंट पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डिकम्पोज होगी ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा. तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 गैसेज आएंगी, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी और दूसरे पे ऑक्सीजन गैस आएगी. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. So next activity is again based on decomposition reaction, activity 1.8. This is take 2 gram of silver chloride AgCl. Silver chloride is AgCl, or you can also take AgBr, silver bromide, any of the 2 solution. Place this on in china dish in sunlight for some time. और इसको आप लाइट में रख देंगे तो लाइट में रखने से ये रिएक्शन होगी. सिल्वर क्लोराइड decomposes to give silver and chlorine. So this reaction is used in black and white photography. This is photo decomposition reaction, and this photo decomposition reaction is used in black and white photography. जो रील हम कैमरे में यूज करते थे पहले, आजकल तो सब डिजिटल कैमराज आ गए ना बेटे, लेकिन पहले हम जो फिल्म यूज करते थे और ब्लैक एंड वाइट फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं उसमें जो नेगेटिव होता था, वो जो मेन ऑब्जेक्ट होता था वो सिल्वर कलर का हो जाता था और बाकी डार्क कलर जो है वो क्लोरीन गैस आते थे. सो दिस इज बेस्ड ऑन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो AgCl की जगह AgBr भी हो सकता है. नेक्स्ट is displacement reaction, activity 1.9. This is copper sulfate solution. You know that the color of the copper sulfate solution is blue. So when ये iron nails डाले हैं इसमें, copper sulfate में क्या डाला है, iron nails. So when iron is added to copper sulfate solution, it forms iron sulfate and copper is displaced. So this is the displacement reaction. Here iron is more reactive than copper, displaces copper from copper sulfate and iron sulfate is formed and the color of the solution get also changed. क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बचा ही नहीं है, आयरन सल्फेट बन गया. आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है. सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज टू ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट. So and this is the last activity, activity 1.10, based on double displacement reaction. You know that double displacement reaction is based on the formation of 2 new compound by the exchange of ions. So when sodium sulfate solution and barium chloride solution is added, both are ionic compound, is added, it forms white precipitate of barium sulfate and sodium chloride solution is formed by the exchange of ions. Here sodium is positive and sulfate is negative. Here barium is positive and chloride is negative. In this case, barium positive combined with sulfate negative, sodium positive combined with chlorine negative to form 2 new compounds. This is also, you get white precipitate of barium sulfate, white precipitate. This we have already discussed. So these are the activities of the first chapter, chemical reaction and equation. Now we are done with the activities and all the articles of this chapter. So in the next lesson we will discuss the question answers and we will take the doubts also. Thank you.